Hello guys, welcome back to Project Guru. Before starting today's video, I would like to wish you all a very happy Dashera. May your spirit rise in your heart that will lead you successfully through all of your achievements. Now let's talk about project. So आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं QR कोड जनरेटर एप्लीकेशन जिससे हम लोग किसी भी टेक्स्ट या लिंक के लिए QR कोड जनरेट कर सकते हैं. So let us see its functionality. Let me run it. And let me enter the text as Happy Dashera. Name of QR code Happy and let its size be 20. Let's click on generate code and it says QR code is successfully saved. So let us check our folder. So ये है वो QR कोड जो जनरेट हुआ है टेक्स्ट हैप्पी दशहरा के लिए. अब और अधिक समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को. सो हम आ चुके हैं हमारे पाइचार्म IDE पर, बट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट QR कोड्स आर. QR कोड्स बेसिकली 2D बार कोड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं टू स्टोर वेरियस इंफॉर्मेशन. QR में QR का मतलब क्विक रिस्पॉन्स होता है और इसे फर्स्ट टाइम एक जापानीज ऑटोमोबाइल इंजीनियर मासाहिरो हारा ने इन्वेंट किया था जब वो काम कर रहे थे एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर डेंसो वेव के अंदर इन द ईयर 1994, और तब इसको कार पार्ट्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इन्वेंट किया गया था. बट QR कोड्स को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली बाय द एंड ऑफ 2010 जब मोबाइल कैमरास की क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हुई. आज के समय में QR कोड्स बहुत ही पॉपुलर है और डेली कामों में हम इसका बहुत यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स, चेकिंग होटल मेन्यू, शेयरिंग वाईफाई पासवर्ड्स, ऑब्टेनिंग प्राइस एंड मेनी अदर डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. QR कोड्स आज इतने पॉपुलर हैं दैट एवरी मोबाइल फोन कम्स विद बिल्ट इन QR कोड रीडर एप्लीकेशन. सो इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन के बाद नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, एंड फॉर दैट सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा QR कोड को. एंड बिफोर इंपोर्टिंग लेट्स गो टू टर्मिनल and let's write pip install QR code. Now मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है बट आपके सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा. Now let's import Kinter as well, and from Kinter let us import message box. Now let's create our main window by initializing tk function, और मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ रूट वेरिएबल के अंदर. Now let us set the title as QR code generator and let us set its geometry as 700 cross 700. Now let us configure its background as teal blue. Now let's call our main loop and इसको run करके देखते हैं. So अब तक के लिए everything is fine. Now let us create a label using label keyword. इसको मैं place करूंगा root पर with text equals to QR code generator, background equals to Azure with font equals to Times, size as 20 and style be bold. Now इसको मैं स्टोर कर रहा हूं in a variable name label1 and this time I will use place method to bind it. Place method का यूज हम पहले भी कर चुके हैं with x and y as parameters, जहां पर हमें x और y की डायमेंशंस देनी होती है. But this time we will use rel x, rel y, rel width and rel height. Now what they are ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. अभी के लिए let us write rel x equals to 0, rel y equals to 0, rel width equals to 1 and rel height equals to 1 as well. So guys, rel x and rel y are basically horizontal and vertical offsets जिसमें हम लोग floating values देते हैं from 0 to 1 एंड इससे हम लोग हाइट एंड विड्थ निकाल सकते हैं एज फ्रैक्शन टू देयर पेरेंट विजेट. नाउ लेट अस रन इट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स फॉर नाउ. लेट्स डू वन थिंग हियर. लेट्स क्रिएट अ फ्रेम. लेट अस प्लेस इट एट रूट विद बैकग्राउंड इक्वल्स टू Azure and border equals to 8. Let us store it in a variable named frame1 and let us place it with rel x equals to 0.15, rel y be 0.05, rel width be 0.07 and rel height be 0.1. Oops, it's a typo. And label को instead of root हम place करेंगे frame1 पर. Now let's run it again.
So this is how it looks as of now. अब बना लेते हैं कुछ widgets to take input. So let's create a frame here. Let us place it at root with background equals to steel blue. Let us store it in a variable named frame2. Now let us place it at rel x equals to 0.1, rel y equals to 0.15, rel width equals to 0.7, and rel height equals to 0.3. Okay, it's a typo. Now let's create another label here. Let us place it at frame2 with text equals to, enter the text /URL, background equals to steel blue, foreground equals to azure, and font equals to Courier. Size be 13 and style be bold. Let us store it in a variable named label2 and let us place it as well with rel x equals to 0.5, rel y equals to 0.2. टेक्स्ट के केस में विड्थ को कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सो वी आर स्किपिंग दैट वन एंड रेल हाइट को मैं सेव कर रहा हूं एज 0.8. नाउ गाइस, लेबल्स एंड फ्रेम्स के बारे में हमने पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में बात की है, जिसमें हमने डॉट पैक एंड डॉट ग्रिड मेथड के बारे में भी पढ़ा था. सो इफ यू हैवंट वॉच्ड दोस वीडियोस येट, आई विल रिकमेंड कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप उन वीडियोस को भी देख लें. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा. नाउ लेट्स क्रिएट एन एंट्री स्क्रीन हियर. इसको भी हम प्लेस करेंगे एट फ्रेम 1 with font equals to century and size be 12. Now इसको मैं स्टोर कर रहा हूं in a variable named text और इसको प्लेस कर देंगे at rel x equals to 0.05, rel y equals to 0.4, rel width equals to 1 and rel height equals to 0.2. Now let us run it once. Okay, हमारी एंट्री स्क्रीन there is a mistake. हमें इसे प्लेस करना है frame 2 which is this frame. अब फिर से रन करके देख लेते हैं and now everything is fine. This is our entry screen. So this was the input of text. Now let's go back down and यहाँ पर हम लोग widgets बनाएंगे to take input of image name. Now image name will be the name of the QR code जो generate होगा. So for that let us make one more frame with the name as frame 3. इसको मैं प्लेस करूंगा रूट पर विद बैकग्राउंड इक्वल्स टू स्टील ब्लू. लेट अस प्लेस दिस फ्रेम विद rel x equals to 0.1, rel y equals to 0.35, rel width equals to 0.7 and rel height equals to 0.3. Now let us create one more label here. Let us name it label 3. Let us place it at frame 3 with text equals to, enter the name of the QR code, background equals to steel blue, foreground equals to azure, font equals to Courier, size be 13 and style be bold. Now let us place this label 3 at rel x equals to 0.5, rel y equals to 0.2. Again यहाँ पर text है, so I'm skipping rel width and I'm setting rel height as 0.2. अब इसको रन कर लेते हैं. So ये आ चुका है हमारा एक और लेबल. Guys, this is our first frame जिसमें हमने बैकग्राउंड को azure सेट किया था just to highlight it, और इसके बीच में QR code generator is a label. This is our second frame जो अभी विजिबल नहीं है बिकॉज इसका कलर स्टील ब्लू है विच मैचेस विद द बैकग्राउंड. बट इस सेकंड फ्रेम के ऊपर हमने प्लेस किया था ये लेबल एंड ये एंट्री विजेट. एंड हियर इज आवर थर्ड फ्रेम. अगेन इसका कलर बैकग्राउंड कलर से मैच करता है, सो दिस इज नॉट विजिबल राइट नाउ एंड दिस इज द लेबल दैट वी हैव क्रिएटेड ऑन दिस फ्रेम. From this we can conclude labels are basically widgets जिसमें यूजर कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकता है एंड एंट्री स्क्रीन आर द widgets जिसमें यूजर कुछ भी चेंजेस कर सकता है. आई होप फ्रेम्स, लेबल्स और एंट्री के बारे में आपको थोड़ा सा इस वीडियो से पता चला होगा, बट टू गेट इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आप पुरानी वीडियोस को चेक कर सकते हो.
नाउ टू टेक इमेज नेम इनपुट, लेट अस क्रिएट वन मोर एंट्री स्क्रीन और इसको हम प्लेस करेंगे एट फ्रेम 3 विथ फॉन्ट इक्वल्स टू सेंचुरी एंड साइज एज 12। इसको मैं स्टोर कर रहा हूं इन अ वेरिएबल नेम और इसको भी प्लेस कर रहा हूं एट relx इक्वल्स टू 0.05, relY इक्वल्स टू 0.4, relWidth इक्वल्स टू 1 एंड relHeight इक्वल्स टू 0.2। अब इसको रन करके देखते हैं। सो दिस इज आवर न्यू एंट्री स्क्रीन। नाउ क्यूआर कोड को भी हम चाहें तो डिफॉल्ट साइज में स्टोर करवा सकते हैं, बट मैं यहां पर मैनुअल साइजेस में स्टोर करवाना चाहता हूं एंड फॉर दैट हमें यूजर से साइज की एंट्री लेनी होगी और उसके लिए मैं बनाऊंगा एक और फ्रेम टू टेक इनपुट ऑफ साइज ऑफ क्यूआर कोड। नाउ इस फ्रेम को मैं स्टोर करूंगा इन अ वेरिएबल नेम frame4 और इसको प्लेस करूंगा एट रूट विद बैकग्राउंड इक्वल्स टू स्टील ब्लू एंड इसको प्लेस करूंगा at relx equals to 0.1, relY equals to 0.55, relWidth equals to 0.7 and relHeight equals to 0.3. Now information provide करने के लिए let us create a label. Let us place it at frame 4 with text equals to enter the size from 1 to 40. Let its background be steel blue, foreground be azure and font be Courier with size as 13 and style as bold। और मैं इसको स्टोर कर रहा हूं इन अ वेरिएबल नेम label4। नाउ इसको मैं प्लेस करूंगा एट relx इक्वल्स टू 0.05, relY इक्वल्स टू 0.2 जस्ट बिकॉज इट्स अ टेक्स्ट। relWidth को मैं अगेन स्किप कर रहा हूं एंड relHeight को मैं 0.08 सेट कर रहा हूं। Now to take input from user, let us create one more entry screen जिसको मैं प्लेस कर रहा हूं at frame 4 with font equals to century 12 और इसको मैं स्टोर कर रहा हूं इन अ वेरिएबल नेम size। साइज को मैं प्लेस करूंगा at relx equals to 0.05, relY equals to 0.4, relWidth equals to 0.5 और relHeight equals to 0.2। Now let us run it एंड यहां पर है हमारा frame 4 with this as label and this is our entry screen। आप लोग चाहे तो डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉन्ट एंड डिफरेंट प्लेस पैरामीटर्स के साथ एक डिफरेंट इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट अस क्रिएट अ बटन जिसको क्लिक करने पर कोड जनरेट होगा। इस बटन को मैं प्लेस करूंगा एट रूट विद टेक्स्ट इक्वल्स टू जनरेट कोड। इसका फॉन्ट में सेट कर रहा हूं एज Courier, साइज एज 15 एंड स्टाइल एज नॉर्मल। नाउ इसको मैं स्टोर कर रहा हूं इन अ वेरिएबल नेम बटन और इस बटन को मैं प्लेस करूंगा एट relx इक्वल्स टू 0.35, relY इक्वल्स टू 0.9, relWidth इक्वल्स टू 0.25 एंड relHeight इक्वल्स टू 0.05। अब इसको रन करके देखते हैं। सो दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। दिस इज आवर बटन जो अभी तक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है बिकॉज इसके लिए हमने कोई भी फंक्शन अभी नहीं बनाया है। सो लेट्स क्विकली गो अप और यहां पर इसके लिए एक फंक्शन बना देते हैं। यहां पर मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं विद द नेम कोड। आई एम टेकिंग अ वेरिएबल नेम QR और इस QR में मैं स्टोर करूंगा QR code डॉट QR code। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं बट मैं यहां पर एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को पास करूंगा विच इज वर्जन और इसमें हम लोग स्टोर करेंगे द साइज ऑफ द स्क्रीन जो हमें मिलेगा गेट फंक्शन से। नाउ लेट अस सेट द बॉक्स साइज एज 10 एंड बॉर्डर एज 5। नाउ QR में हमें वो डेटा ऐड करना होगा जिसको हमें एनकोड करना है एंड फॉर दैट वी हैव टू राइट QR डॉट एड डेटा और ये डेटा हमें मिलेगा इस टेक्स्ट एंट्री फील्ड से। सो वी हैव टू राइट टेक्स्ट और इसको भी हम रिट्रीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ गेट फंक्शन। नाउ आई एम राइटिंग QR डॉट मेक फिट इक्वल्स टू ट्रू। आप लोग चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसका बेसिक यूज है टू मेक एंटायर QR स्पेस यूटिलाइज्ड, दैट इज इमेज साइज और QR कोड का साइज सेम होगा, वहां पर बिल्कुल भी बॉर्डर क्रिएट नहीं होगा। अब कर लेते हैं QR को जनरेट एंड मैं इसको स्टोर कर रहा हूं इन अ वेरिएबल नेम IMG।
नाउ इसको सेव करने के लिए वी हैव टू राइट img.save और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स का एंड एक्सटेंशन इज .png. नाउ इमेज को स्टोर करने के बाद लेट अस डिस्प्ले अ इंफॉर्मेशन मैसेज with the title as QR code generator and message as QR code is successfully saved. Now इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे बटन के अंदर एंड फॉर दैट वी हैव टू राइट कमांड इक्वल्स टू नेम ऑफ द फंक्शन विच इज कोड. अब देख लेते हैं इसको रन करके. सो लेट अस राइट द टेक्स्ट एज हाय आई एम अक्षय. Let the name of QR code be hi and let its size be 10. Generate code and it says QR code is successfully saved. So here is the file जो generate हुई है इस QR code generator application के through. And guys एक चीज मैं और शेयर करना चाहता हूँ. Earlier when I was working on this project और मैं QR code को generate करने की कोशिश कर रहा था, it showed an error which says no module name image. सो अगर आप भी वो इशू फेस कर रहे हैं तो सिंपली गो टू टर्मिनल और यहां पर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल पिलो. ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा. इसके बाद आप प्रोग्राम को रीरन कर सकते हैं और वो एरर नहीं आएगा. So that's it from this video guys. I hope you liked the video and if you do, kindly give it a thumbs up, share it with your friends and forgot not to subscribe to our channel. If you're facing any issue while working on this project, you can contact me on my Facebook and Instagram handles, link in the description box. Also check the description box for source code of this project and the links to our other YouTube videos as well. This is Akshay signing off.